Namaskar, my name is Gajendra Das Sharma and you are watching English, and in this video we are going to explain the poem Fire by Nikita Gill. This poem is a very feministic in tone and it is in the form of exhortation. एक advice, एक exhortation, एक अर्ज की तरह है बाकी women को, the women who are vulnerable, the women who are exposed to all sorts of oppression and violence or सप्रेशन, सब्जुगेशन, और उनके लिए एक मैसेज इस पोम के थ्रू दैट बी योर सेल्फ. बीइंग योर सेल्फ इज़ नॉट अ फॉल्ट. बीइंग योर सेल्फ इज़ नॉट गोइंग अगेंस्ट द नॉर्म्स. बीइंग योर सेल्फ when you feel that the other person, the other half of the society is oppressing you. The fire is the passion. Reinvent herself against oppression, violence, subversion, subjugation, and how they can retaliate and how they can make a niche for themselves, how they can make a place for themselves. ये एक अर्ज की तरह है. The poem is in the form of an exhortation. Exhortation is a kind of advice, strong advice. A strong advice that is very required, very much required when you feel that it is a matter of survival, it is a matter of the existence. जब बात एग्जिस्टेंस की होती है, सर्वाइवल की होती है, उस सेल्फ डिग्निटी की बात होती है, यू नीड टू री इग्नाइट द फायर दैट इज इन योर विदिन. द फायर इज देयर इन योर विदिन. द ओनली थिंग दैट यू रिक्वायर इज टू री इन्वेंट, री इग्नाइट इट एंड किंडल इट. उस आग को जलाना, दोबारा से जलाने की ज़रूरत है. इवन दो द सोसाइटी फील्स और डीम्स इट टू बी इविलसम इन नेचर, क्योंकि कुछ इमेजरी यहाँ पे इविलसम, उस नेचर को इग्नाइट करने के लिए यहाँ पे दी है पोम में. द इविल सप्रेसेस यू, तो उस इविल का जवाब इविल से, उस ऑपरेशन का जवाब उस रिटेलिएशन से, उस सब्जुगेशन का जवाब उस पैशन से, उस फायर से. व्हेन इट इज़ बियॉन्ड कंट्रोल, when it is beyond remedy. Now let's move to the poem. First stanza is in the form of a background. बैकग्राउंड किस तरीके से? जब आपको ये लगने लगे, when you feel that fragility, your flexibility is considered your weakness, when your soft tender nature is considered your weakness, when your realization is understood or misunderstood to be your shyness, when your lack of raising a voice for yourself is considered to be your lack of spirit. उस बैकग्राउंड में you need to reinvent your fire. You need to reignite the fire that lies your within. वहाँ पर तो ये एक बैकग्राउंड की तरह काम करता है उन लोगों के लिए, बैकग्राउंड फॉर द women who are prone to violence, oppression and subjugation. The poet through this poem wants to urge all these women to raise their voice against all the oppressions and evilsome treatment and maltreatment perhaps, and raise your voice and raise your fire and ignite your fire that lies in your within in order to reclaim your dignity, in order to reclaim your self-esteem. उस आत्मसम्मान और उस जो वजूद की लड़ाई है, उस वजूद को मेंटेन करने के लिए ये लड़ाई ज़रूरी है. इट्स अ काइंड ऑफ रिमाइंडर. ऐसा लग रहा है कि दैट वीमेन हैव बीन सब्जुगेटेड और दे आर बीइंग सब्जुगेटेड, दे आर बीइंग ऑप्रेस्ड बिकॉज दे हैव फॉरगॉटन द स्पिरिट ऑफ फाइट इन देयर विदिन. शायद वो लड़ने की जो एक क्वालिटी है, वो एक अर्ज है अपने आप को रिक्लेम, अपने पास्ट को रिक्लेम करने की और अपनी एग्जिस्टेंस को रिक्लेम करने की, वो शायद क्वालिटी खो चुके हैं, ये भूल गए हैं. वो जो पावर है उस पावर को खो चुके हैं. तो
पावर याद दिलानी पड़ती है। हनुमान जी को भी पावर का रियलाइज कराया गया था, का चुप साध रहा बलवाना। तो तभी उनको जब याद आया कि ही हैज़ द पावर टू डू द मिरेकुलस थिंग्स, सो वीमेन आर ऑल्सो बीइंग रिमाइंडेड बाय दिस पोएम टू रीइग्नाइट द फायर इन देयर विदिन in order to reclaim the identity, reclaim the self dignity। वो dignity की लड़ाई है, उस वजूद की लड़ाई है, उस existence की लड़ाई है। So the poem says, remember what you must do when they undervalue you। On the one hand, they consider to be your better half or the other half of your existence or this, but in the real sense of the term, they undervalue you. They don't consider your value as the other half, the parallel, the equal. They consider you as the inferior. They consider you as their subordinate. They want you to accept that servility। तो जब वो आपको लगने लगे, आप याद करिए, आप सोचिए कि when you realize that they are undervaluing you, when they think your softness is your weakness, the tender temperament, the soft temperament, the flexible temperament, this flexibility is misunderstood to be their weakness। Everywhere they try to adjust, everywhere they have been adjusting, to certain extent they have been compromising with their dignity also। And then this adjustment, the quality of adjustment seems to have been mistaken, seems to have been misinterpreted। They treat this quality of compromise, the quality of adjustment, the quality of flexibility to be your weakness। You realize this when you realize that they have started taking the quality of your flexibility as your weakness, you need to reinvent yourself। तब आपको ज़रूरत है। When they treat your kindness like it is their advantage, when you are being kind and then they think that it is your servility and it is their quality that you are kind to them, you are kind to them because you are grateful to them, they are doing everything for you and in return you are expected to be kind। Your kindness is your requirement, you have to be kind because all the kind of things are being done to you, are being done for you, so you are expected to be grateful and as such this gratefulness should be reflected in the form of being kind। तो जब उस kindness को ये समझा जाने लगे कि ये आपकी weakness है या उनकी advantage है, you are kind not because you are kind from your within, you are kind, they consider that they are doing very much for you and as such you are showing a kindness as a token of your gratefulness। You are kind, that suggests that you are grateful to all the favors that they have done to you। तो अब ऐसा लगने जब लगे कि यार वो फेवर करते जा रहे हैं और आप उसका जवाब काइंडनेस से दे रहे हैं, तो वो काइंडनेस आपकी क्वालिटी ना हो करके उनकी उस एहसान का बदला चुकाया जा रहा है। तो ऐसा जब आपको लगने लगे कि उस काइंडनेस आपकी एक नेचर ना हो करके उनकी एडवांटेज है, and at any time they can take control of that advantage। अगर कुछ मैं आपके लिए कर रहा हूँ और मुझे एहसास है कि मैं आपके लिए कर रहा हूँ और आप जो उसके रिटर्न में कर रहे हो वो ग्रेटफुलनेस, वो एहसान उतारने के लिए कर रहे हो, तो मैं कभी भी आपके ऊपर डोमिनेंस कर सकता हूँ। तो जब आपको ऐसा लगने लगे, सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ बैकग्राउंड। अंडर दिस बैकग्राउंड अगर ये चीज़ें आपको लगने लगे तो फिर क्या है, जो नेक्स्ट स्टैंजा है वो एक एक्सहॉर्टेशन की फॉर्म में है। दिस स्टैंजा इज इन द फॉर्म ऑफ exhortation, advice, strong advice that is required very much to reclaim self dignity and existence। क्या कह रही है वो? You awaken every dragon, every wolf and every monster that sleeps inside you, and you remind them what hell looks like when it wears the skin of a gentle human। So
It is time you reminded them what you yourself are, what qualities you possess. It is time you reflected those qualities. It is time you made them realize of your inner fire, inner urge of reclaiming the dignity that has been lost, that has been snatched. So you awaken and kindle, ignite every dragon. अब इनके भी मीनिंग है. The dragon, the wolf and monster, they have their separate symbolic meanings. They symbolize certain qualities. वो qualities जो कि women के अंदर हैं, उन क्वालिटीज को बाहर निकालने की बात. तो ड्रैगन की क्वालिटी क्या है? एक फियर्सनेस, सुपरनेचुरल पावर, विजडम एंड अनटेम्ड नेचर. These qualities are symbolized by dragon. Fierceness, supernatural power, wisdom or untamed nature. Now it is time you ignited these qualities in your within. Now it is time you enkindled these qualities in your within and show the world that you possess these qualities, and then you cannot be oppressed as such. Gone are the days when you oppressed the women like that as such. Now they have the dragon in their within. The dragon sleeps. Now it is time to awaken it and to show the reflection to the menfolk, to the patriarchal society, what they are doing, they have been doing. In addition to the fierceness, wolf symbolize the intriguing power or the guardianship. Actually they develop to remain in pack of wolves. जब wolves को आप देखते हो तो they remain in pack means the group, झुंड में रहते हैं. So they develop that social instinct. They have the guardianship. They take care of other. In addition to being fierce, in addition to being very wild in nature, so they are wild also. Wild, fierce, ferocious and possessing intriguing quality of guardianship and social instincts. So all these qualities are also there in within of a woman. It is time to rekindle them, reignite them. And similarly, monster refers to, monster is a monster, means the cruel aspect of someone's personality. The flaws, the powerful, the power, the evil, violence, individuality, that being yourself, being oneself. So you awaken every dragon. Dragon means fierceness, supernatural power or wisdom or untamed nature. The generic quality is your untamed nature, which cannot be tamed. You behave that you have been tamed, so it is your flexibility. It is your nature of adjustment. But that is not your generic quality. Now it is time to reawaken that generic quality of being untamed, that fierceness. You awaken every wolf. Wolf, the power, the intriguing power, the guardianship, the quality of taking control. You have the quality of taking control, you have the quality of controlling, dominating, overshadowing, but now they need to be reawakened in the form of wolf. And in the same way, you enkindle monster. Monster means the evilsome, the wildness, the untamed fierceness, the individuality. You be yourself. Whatever you are from your within, you feel like being, you be. Even though the society does not accept it, even though the society does not feel conducive in that. So you let it be. तो इट इज टाइम यू अवेकन्ड. आपको क्या करना है? अवेकन करना है उस एवरी ड्रैगन को, वुल्फ को, मॉन्स्टर को, दैट स्लीव्स इनसाइड यू, दैट लाइज इनसाइड यू, दैट लाइज इन योर विदिन. वो आपके अंदर ही है, बट उसको जगाने की बात है. जगाना कब है? ऐसा नहीं कि वो थ्रू दिस पोएम द पोएट इज ट्राइंग टू क्रिएट अ रिबेलियन जस्ट लाइक एनीथिंग. क्यों? फॉर इट्स ओन सेक. कुछ नहीं, चलो लड़ाई करते, आओ सारे जो आदमी हैं, सारे जो मैन हैं, सबको आओ मारते हैं. इट इज व्हेन you realize that you are being maltreated,
It is when you realize that your advantage, your flexible nature is being misunderstood. It is when you realize that your flexibility is considered your fragility. It is when your kindness is considered your weakness and their advantage. तब की बात है, not like anywhere or everywhere. If everything was okay, so everything is okay. But when you realize those things, then only you can do this. Otherwise, the dragon, the mole, the wolf and the monster need to be let sleep. उनको जगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कब जगाने की ज़रूरत है? When it is required, when the things are beyond control, when the things gone beyond control, तब ज़रूरत है उनको जगाने की. So that sleeps inside you and you remind them. Them means the people responsible for your operation, the people who misjudge you, the people who consider your flexibility, your fragility, the people who consider your kindness their advantage, people who devalue you, undervalue you, वो सारे लोग हैं. उनको दिखाने की जरूरत है that hell looks what hell looks when it wears the skin of a gentle human. Even ये रियलाइज कराने की बात है कि इवन हेल इज हेल, फियर्सनेस इज फियर्सनेस, इवन दो इट हैज टेकन द गाइज ऑफ जेंटलनेस. द हेल दे हैव डेवलप्ड इनसाइड देम. उस हेल के दर्शन कराने की ज़रूरत है और ये बताने की ज़रूरत है कि इवन हेल कैसा लगता है जब उसने ह्यूमैनिटी का एक बाहर से कवरिंग कर रखी है. द वेयर द स्किन से यहाँ पे क्या है? गाइज, टेकिंग द गाइज ऑफ ह्यूमैनिटी, टेकिंग द गाइज ऑफ जेंटलनेस. उस जेंटलनेस के पीछे जो फियर्सनेस है, जो फेरोशियसनेस है, वो कितनी डिस्ट्रक्टिव हो सकती है अगर उसको इग्नाइट कर दिया जाए. तो ये एहसास कराने की बात है कि इवन हेल लुक्स व्हाट हेल लुक्स व्हेन इट इज अंडर द गाइज ऑफ जेंटलनेस. तो ये क्या है? इट इज द हेल that lies in your within. Now this hell needs to be exposed. Now this hell needs to be shown to the people in order to make them realize that what they have been understanding about you has not been the original picture. You were silent and then you were considerate, you considered everything, you complied everything, you have been adjusting everything. So that was your good nature, that was your qualities, that was not your weakness. That does not suggest that you could not retaliate anyway. You could not raise your voice for your reclaiming of your dignity. This was not so that you don't have any urge to reclaim your existence. तो ये उनको जताने की ज़रूरत है कि any time these qualities, this hell from the within that remains on a very silent tangible mode, वो कभी भी बाहर आ सकता है. That is just like a volcano. उस volcano का अगर मुंह खोल दिया जाए तो फिर the things would not be conducive, the picture would not be wholesome. If the women realize that they need to let the hell loose, so that would not be a wholesome picture for the mankind. तो वो एहसास कराने की बात है, लेकिन वो कब? जब उसकी ज़रूरत पड़े. नॉट लाइक एवरीवेयर. पता चला कुछ भी हुआ और अपने अंदर का जो हेल है वो लोगों को दिखाना शुरू कर दिया. इट इज़ व्हेन द थिंग्स आर बियॉन्ड रेमेडी. सो द पोएट ट्राइज टू अवेकन ऑल द women who are prone to this kind of things. जो फर्स्ट स्टैंजा में बात थी कि द वीमेन हु आर प्रोन टू एक्सपोज्ड टू वल्नरेबल टू वायलेंस, सब्जुगेशन, ऑपरेशन, मार्जिनलाइजेशन, कोलोनाइजेशन. सो उन वीमेन को वो अपने अंदर का जो हेल है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए वुल्फ और ए ड्रैगन और अ मॉन्स्टर, उसको जगाने की ज़रूरत है और लोगों को दिखाने की ज़रूरत है कि हेल कैसा लगता है. इवन उसने जेंटलनेस का जो गाइज पहन रखा हो तब भी. तो हेल इज हेल इवन दो इट हैज टेकन द गाइज ऑफ जेंटलनेस. हेल तो हेल ही रहेगा. सो डोंट एंगर मी. एक डायलॉग है ना, डोंट एंग्री मी. तो ये वही है. उन वीमेन से ये अर्ज की जाए कि ये बताने की बात है उन सारे लोगों को, डोंट एंग्री मी, अदरवाइज वी विल लेट लूज आवर ड्रैगन एंड वुल्फ एंड मॉन्स्टर
And then if all the three entities come outside, they will create havoc, they will consume your dominance, they will consume your patriarchy, they will consume your subjugating force, they will consume your entire system, apparatuses, cultural, social, political, by which you have been subjugating us. तो वो फिर wholesome picture नहीं होगी. So that is all for now. Hopefully I made sense to you as far as the explanation of this poem is concerned. और जो भी आपकी queries हैं आप comment box में आप बिल्कुल रेज कर सकते हैं. विल ट्राई टू रिजॉल्व देम, आंसर देम. अगर आप नए हैं इस चैनल पे सो मेक इट एज पॉइंट टू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू डोंट मिस दीज वीडियोस. अगर आप पीजी यूजी के स्टूडेंट्स हैं सो दीज वीडियोस आर वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू. एक्सप्लेनेशन इज फ्रॉम कंपटीशन एंड फ्रॉम योर एग्जामिनेशन, एकेडमिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है. So like this video, share it among your friends who are also in search of this kind of content. So thank you so much. Keep learning, stay motivated.